Alright, so hi, hello, good afternoon, my dear students. This is Ritika welcoming you all at the very amazing platform Unacademy. Now, this is the class for grade 10 ICSE, right? As you know that your examinations are very soon going to start. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? We are going to focus on the important questions and we are going to focus on the answer writing, है ना? तो in the previous session, if you were there, you might have seen कि हमने दो topics cover किए थे. We covered ammonia. Hi Kamakshi, hello. We covered ammonia and we covered hydrogen chloride, है ना? तो आज जो है हम लोग another two topics we are going to cover, okay? From the study of compounds, right? Study of compounds में हमारे पास 4 जो है basic chapters है, ammonia, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है yesterday. Hello, good afternoon dear. And today it's the turn for nitric acid and sulfuric acid. अभी talking about how the class flow is going to be, हम लोग कैसे questions करने वाले. I'll just share with you some important information. So first of all about me, this is Ritika, your chemistry educator. I have completed my engineering in electronics and communication and have been awarded grade A. Okay, I think it is fine now. Alright, sorry, it was a bit of network problem. So what I was telling about the subscription, right? So this offer, it is valid only up till today. Hello Muskan, that if you take the subscription for 12 months and above, you get 1 month subscription absolutely free. And you can use this code. Okay, this is my code that you can use to avail the discount. And for grade 10, there is one more offer on 3 month subscription. तो बच्चे लोगों अगर आप 3 month का subscription लेते हैं, right, you will be getting the 40% off, okay, and उसका जो pricing है, it is reduced from 7,500 to 4,500, okay, but यहाँ पर ये offer it is only valid till 25th of March, so जल्दी करना पड़ेगा, है ना? Okay. तो हम लोग क्या करेंगे, एज यू नो कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है, इट विल बी हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यू एंड दी थ्योरी क्वेश्चंस, राइट? तो हमने जो क्वेश्चंस यू नो द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, इट विल बी इंक्लूडिंग बोथ टाइप. थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास और हमारे पास क्या होगा, द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो बी प्रेजेंट. Okay, so we will be starting with the very first question. The nitrate salt which does not give a mixture of nitrogen dioxide and oxygen on heating is dash. So students, you can please let me know your answers in the chat box and let us see what is the correct answer. So try it. According to you, कौन सा nitrate salt है जो कि mixture नहीं रहता है NO2 और O2 का when we heat it? So Kamakshi is saying it is silver nitrate. Okay. Anyone else? Muskan says that it is A. अच्छा. और कोई? तो यहाँ पर students, if I talk about KNO3, that is potassium nitrate. Okay. ये क्या होता है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग द ऑक्साइड, वी विल बी गेटिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इट विल बी पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The chemical which is used in brown ring test. तो brown ring test एक बड़ा ही important topic है from nitric acid in your practicals also. तो कौन सा chemical हम लोग use करते हैं in the brown ring test? Yes, anyone? Come on, you should be getting this answer correct because ये तो practical का भी बहुत important part है.
अच्छा, what is brown ring test used for? To identify which ion Okay, so Rajat is saying C. Yes, C is the correct answer. Okay. All right. Moving on to next question. Lead nitrate decompose होने पर what does it give? Which oxide do we get on decomposition of lead nitrate? What is lead nitrate? It is PbNO3 whole twice. Just go for the equation and think. C. Nitric oxide. Are you sure that we get nitric oxide? तो स्टूडेंट्स these type of questions are really important है ना, ये questions बिल्कुल पूछे जाते हैं in your examinations, and for that you should be very thorough with the equations, right? तो if I talk about lead nitrate, ये decompose होने पर it gives oxide, then it gives nitrogen dioxide and oxygen. So with what will be our correct answer now? Look at the equation and tell me what is the correct answer. कौन सी oxide दे रहा है? It is giving nitrogen dioxide. Okay, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? Lead nitrate के decomposition पर we are getting nitrogen dioxide. Understood up till here? Moving on to next question. Corrosive action of sulfuric acid is on the skin is due to. तो sulfuric acid जो है बड़ा ही corrosion kind of effect देता है, तो किस nature की वजह से this effect is present? correct. A और B? First of all यहाँ सारा A हो गया है, so I'm sorry for that. It's A, B, C and D. Yes, which nature? It is dehydrating nature. तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका बड़ा ही dehydrating nature होता है. Okay, volatile, no, it has nothing to do with the volatile nature, dear. जो dehydrating होता है उस वजह से हमारी स्किन पर ये corrosive effect बताता है. Next, drying agent undergo chemical reaction with the gases. अच्छा, दो टाइप के agents पढ़े थे हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, drying and dehydrating, है ना? तो ड्राइंग एजेंट क्या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? डज इट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन? यस और नो? कम ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? ड्राइंग एजेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ट्रू और फॉल्स? Okay, so the correct answer over here is drying agent जो है it does not participate. It dehydrating agent, drying agent नहीं करता है, okay? वो सिर्फ water remove करता है, so it is not participating in the chemical reaction. It does not undergo chemical reaction, okay? Next, very easy question I suppose. कौन सा catalyst use करेंगे हम लोग? Hi दीपांशु, hi माही. हाँ जी, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? It's BCD. I don't know how did it go wrong. हाँ जी, कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. It is vanadium pentoxide. Correct, कामाक्षी, अकीर्ति, correct. Vanadium pentoxide. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो it works like what? Dehydrating agent, typical acid, drying agent, least volatile acid, what? ये स्टूडेंट्स, जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इट वर्क्स एज व्हाट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके,
Okay, so how many of you think that it is B? जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा ऑफ एसिड, राइट? सो इट विल बी वर्किंग बेसिकली एज अ टिपिकल एसिड. ओके, नेक्स्ट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाउ विल इट लूज द वाटर? जो वाटर कंटेंट होता है कॉपर सल्फेट में इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, वो वाटर कैसे रिमूव हो सकता है? On adding concentrated H2SO4 or on heating or both or none? हाँ जी, how will the water be removed? C. Divya says C, Muskan says C, Kamakshi says A. Okay, हाँ जी, what about other students? बोथ, हाँ, ओके. सो द करेक्ट आंसर एक्चुअली इज, जो हाइड्रेटेड हमारा कॉपर सल्फेट होता है, या तो आप उसे हीट कर दो या कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करो. अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर इट वर्क्स एज व्हाट? करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो इट इज वर्किंग एज व्हाट? टू रिमूव द वाटर. जस्ट थिंक एंड टेल मी. एंड नेक्स्ट इज, select a pair of gases which turn lime water milky. Okay, the easiest question of all, I guess. Dehydrating agent, correct. Which gases turn the lime water milky? Hello Tanveer, hi, most welcome. Yes, which gases turn lime water milky? I got no answer for this. Come on, that is so easy. Okay, Raghavendra says, okay, yes, correct. You're correct, Raghavendra. What about others? बच्चे लोगों, ये questions are very important for your term 2, right? These type of questions are definitely asked. करेक्ट, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो सभी को पता होगा, या एंड द सेकेंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज नोन एज डैश. व्हाट आर द अदर नेम्स दैट वी कैन गिव टू सल्फ्यूरिक एसिड? Okay, some are saying C, some are saying A. Correct. It is known as oil of vitriol plus king of chemicals. Okay. अच्छा, oil of vitriol क्यों बुलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को? What's the reason? Oil of vitriol क्यों बुलाएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को? Why is it known as oil of vitriol? Yes, the answer is correct, लेकिन अब बात आती है कि इसको क्यों बुला रहे हैं हम ऑयल ऑफ विट्रियोल. What's the reason behind it? Yes, I am telling you why is it known as king of chemicals. First, let's talk about oil of vitriol. तो oil of vitriol क्यों बुलाते हैं? Because it is in the olden times जो है सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिलता था हमें? By heating the crystals of green vitriol. Okay, it is FeSO4.7H2, right? तो उसे हीट करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. और बात करते हैं किंग ऑफ केमिकल्स. किंग ऑफ केमिकल्स हम लोग इसीलिए बुलाते हैं बिकॉज ऐसा कोई भी और केमिकल नहीं है जिसे इतनी सारी इंडस्ट्रीज यूज करे. ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड इट इज यूज्ड बाय नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन some or the other use. Okay, तो वो हमारा king हो गया of chemicals. Next, sulfuric acid reacts with base to form dash. अच्छा, ये तो किसी का wrong होना ही नहीं चाहिए. The easiest question of all. Correct Kamakshi, correct everyone.
Tell me, what does it react and form? And what do we call this reaction as? When an acid and base reacts to form salt and water. Okay, that is the correct answer. What this reaction is known as? कुछ एन से स्टार्ट होता है आई गेस. करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिव्या, मोहम्मद तनवीर, करेक्ट, परफेक्ट. तो जब एसिड एंड बेस व्हेन दे रिएक्ट दे गिव आउट व्हाट, वो हमें देंगे सॉल्ट एंड वाटर. और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. समझ आया? एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? Chalo, moving on to the next question. What are the basic raw materials for manufacture of sulfuric acid? Sulfuric acid को obtain करने के लिए जो raw materials हम use करते हैं, कौन से raw materials है वो? Okay. The correct answer is sulfur and pyrites. तो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेसिकली हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस से वी आर ऑब्टेनिंग इट. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना. तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सल्फर और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पायराइट. सल्फर से कैसे होगा? सल्फर, यहाँ हमें लुइसियाना सल्फर यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ प्योर सल्फर. तो इसके ऑक्सीडेशन से व्हाट डू वी गेट? वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड. और व्हेन वी हीट द आयरन पायराइट्स, उससे भी हमें व्हाट डू वी गेट? वी गेट द सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड दैट वी नीड. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. Next, which correct burning of sulfur, which compound of sulfur attacks the vanadium catalyst? तो अगर हमारा ये pure नहीं हुआ तो catalyst it gets poisoned. Please recommend me book for chemistry sem 2 for sample paper. So sample paper actually we are solving already and I guess हमारा जो next class होगा, next 2 classes के बाद हम लोग 2 to 3 sample paper solve करने वाले मोहम्मद तनवीर. So you can attend the classes and the official sample paper is also out, so you can also go for solving that. Hanji, the correct answer over here it is arsenic. Okay. Now talking about some of the important things about Unacademy free special classes. तो आप लोग ये जो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज आपके पास ऐप होना चाहिए. ऐप कौन सा? Unacademy लर्नर ऐप. ओके, यू कैन गेट इट फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. यहाँ पर यू कैन हैव रियल टाइम इंटरेक्शन विथ योर एजुकेटर्स. देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. हमारे पास क्वेश्चन टैब है. ओके, यू कैन अटैच द इमेज. ओके, and you can also have live poll options. तो यहाँ तो हमें write करना पड़ रहा है. In the live classes you can just click on the option A, B, C or D and you can even see the leaderboard कि कितने आंसर आपके करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, how are you standing in the class. तो आज जो है हम लोग this is for all the students who have just entered the grade 10. We are going to start the chemical bonding at 4 PM today. Next is why you should be subscribing for Unacademy, so you can learn from the comfort of your home. You will be having unlimited access to courses. You will be getting all the study material in PDF format and you will be having regular doubt clearing and answer writing sessions, right? So you can take any subscription according to your choice, 3 months, 6 months, 12, 36, anything, and you can use my code to get an instant 10% discount. Okay.
Chalo, now we will be moving on to the theory questions. The first question is sulfuric acid, it is manufactured by contact process, and give two balanced equation to obtain sulfur dioxide in this process. So what do you think? Abhi humne two equations, we have just seen two equations. Yes, what are those equations? Yeah, what are those compounds from which we can get sulfur dioxide? Anyone? Yes, anyone? What is the compound? What are the compounds? So if I go for the compounds, the first one is abhi humne padha tha Louisiana sulfur. So we can obtain it by the oxidation. हमारे पास क्या आ जाएगा? We will get sulfur dioxide. Okay, and the second one is by the iron pyrites. Okay, so we can get it by iron pyrites. करेक्ट दिव्या, करेक्ट कामाक्षी. तो ये हमारा जो है फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज गिव द कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2. तो किन कंडीशंस में ये जो ऑक्सीडेशन है इट विल टेक प्लेस? एनीवन? प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा? Okay, the pressure is kept high. Okay, we need high pressure. Temperature जो है हमारा it will be approximately 450 degree Celsius. अच्छा, excess of oxygen क्यों चाहिए? Can anybody give me the answer? Why do we need excess of oxygen over here? Correct, Kamakshi. It is excess of oxygen that we need. नेक्स्ट इज नेम द कैटलिस्ट यूज. अच्छा, ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए. अभी हमने डिस्कस किया. व्हाट इज द कैटलिस्ट? अ सूटेबल कैटलिस्ट. वो सूटेबल कैटलिस्ट कौन सा है कामाक्षी? ये स्टूडेंट्स हरी आप. तो वो जो हमारा सूटेबल कैटलिस्ट है वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड. ओके, और वी कैन इवन यूज प्लैटिनम, बट या वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज प्रेफर्ड. करेक्ट कामाक्षी. इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. करेक्ट मुस्कान. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ गया? या why H2SO4 is not obtained by directly reacting SO3 with water. तो हमारा ना एक बीच में ब्रेक आ जाता है. ओके, तो why is that oleum and all going on? हम लोग directly SO3 को water में dissolve क्यों नहीं कर देते, react क्यों नहीं करा देते? What's the reason behind that? Yes, students. Why cannot we get directly? तो यहां पर जो हमारा रीजन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर डी. तो ये रिएक्शन बड़ा ही करेक्ट दिव्या, एक्सोथर्मिक हो जाएगा. राइट, इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, फर्स्ट रीजन. और उसके बाद जो H2SO4 प्रोड्यूस होगा वो इतने छोटे छोटे मिस्टी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा. ओके, जिसको कि हम लोग एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते. सो इट विल बी गिविंग मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ H2SO4. ओके, तो इसलिए वी नीड टू गो फॉर दी अदर प्रोसेसेस को. वी कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद वाटर. Name the chemical used to dissolve SO3 and also name the product form. Which chemical do we use to dissolve SO3?
concentrated H2SO4. करेक्ट दिव्या. सो यहाँ पर जो E पार्ट है उसका हमारा आंसर हो जाएगा इट इज concentrated H2SO4. अच्छा, इन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? H2S2O7 जिसे हम बोलते हैं ओलियम. करेक्ट. Next is name a gas that can be oxidized to sulfur. Which gas can be oxidized to sulfur? Okay, giving you a hint, it has got a rotten egg smell. Which gas? Rotten egg smell. Okay, इससे तो बिल्कुल पता चल जाना चाहिए. H2S. It is that can be oxidized to sulfur. Correct. Next question है कि अगर हमारे पास कोई concentrated strong acids होते हैं, not only H2SO4, हम लोग directly उसमें water क्यों नहीं डाल देते dilute करने के लिए? What's the reason that we don't add water to concentrated H2SO4 or any strong acid to dilute it? Any reasons? Okay, so the reason is because it reacts with water. Highly exothermic, yes. तो ये जो हमारा reaction है ये बड़ा ही exothermic हो जाएगा. Okay, and it can cause harm. It will suddenly increase the temperature. और अगर acid के splashes हो गए, correct दिव्या, तो बहुत problem हो जाएगी. It can give us burn. So it is overall the correct. You could give the answer that it is very exothermic reaction. Next, give a chemical test to distinguish between dilute and sulfuric acid and dilute hydrochloric acid. दो acid दे दिए आपको 2 bottles में, एक में dilute sulfuric है, एक में dilute hydrochloric है. How will you distinguish? कुछ अमोनिया से रिलेटेड है, इफ यू रिमेम्बर. चलो, अगर इसका हम लोग इजी सा आंसर बताएं. इफ आई टॉक अबाउट अमोनिया, वोलेटाइल प्रॉपर्टी. ओके, इट इज अ केमिकल टेस्ट देयर अनुभव. सो अभी अगर हम बात करें कि एक ग्लास रॉड, इफ यू हैव सीन इट, ग्लास रॉड विच इज डिप्ड इन अमोनिया, अगर हम वी टेक इट, तो विथ डाइल्यूट HCl हमें क्या मिलेगा? We will be getting the white fumes, dense white fumes of ammonium chloride. Okay, लेकिन with dilute sulfuric acid ऐसा कोई fumes नहीं मिलेगा, right? So no fumes. So this is how we can distinguish. And the next one is sulfuric acid है, दोनों एक तरफ dilute है, एक तरफ concentrated है. अभी कैसे distinguish करें? Using zinc. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? When zinc reacts with H2SO4, that is dilute H2SO4, I'm sorry, तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी. और हाइड्रोजन गैस जो है, we know that it is produced by a pop sound. और सेकेंडली अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की, तो यहां हमें मिलेगा जिंक सल्फेट
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अब यहाँ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, what does it do? It will be turning the acidified potassium dichromate paper to green color. Okay, so these are the basic answers. Okay, there are other options also, but I have just taken one. Okay, next is name the products formed when hot and concentrated sulfuric acid react with following. अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? What it will form reacting with sulfuric acid? Correct, Divya. It will be forming SO2. So first of all, when we take sulfur and it reacts with sulfuric acid, students please take care of balancing the equation. है ना, यहाँ तो चल जाएगा, but exam में you please focus on balancing the equations very properly. तो ये हमारा हो गया. Yes students, क्या बनाएंगे यहाँ पर? What we will get? We will be getting C and water, carbon. Okay, after that it is carbon. When it reacts with carbon, what are the products that we get? That is the correct answer. After that, the last one is copper. How it will be reacting with copper, anyone? Correct, and above it is copper sulfate, SO2 and water. Okay, next question is give reasons that concentrated sulfuric acid it is kept in tight bottles. Why do we store it in tight bottles? Anji, why do we store concentrated sulfuric acid in tight bottles? So the basic reason is जो हमारा ये sulfuric acid होता है in the concentrated form, इसका nature होता है hydrogen sulfide. What's the reason? Why cannot we use it for the drying agent? Understood everyone? Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसे हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड. सो वी हैव टू गिव द chemical equation. I'll just give it right away here. Plus H2SO4, it will be giving us what? It will be giving us the nitric acid. Correct? After that, next question, give reason that sulfuric acid behaves as acid when it is dilute. Why does it behave as acid when it's dilute?
Okay, so the basic reason is जो हमारा sulfuric acid है, if I talk about dilute acid, it is giving the ions. Okay, and it shows the acidic nature. Next is sulfuric acid. It is a dibasic acid. So why do you think it is a dibasic acid? Talking about H2SO4, if it dissociates, we get this. Okay. Okay, so the basic reason is जो हमारा ये concentrated H2SO4 है, it has got a great affinity for chemically combined water molecules, and that is why it acts as a dehydrating agent. Understood, everyone? Hope that anyone? The fixation of nitrogen basically means जो हमारा atmospheric nitrogen है, उसको we are converting into the useful compounds of nitrogen. So basically, it is conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compounds. Okay, so that is the reason basically that that is the meaning of fixation of nitrogen. Next, how will you prepare the following from nitric acid? Okay, can anybody tell me how is sodium nitrate prepared from nitric acid? So if I talk about sodium nitrate, we can get it by using sodium hydroxide. If I react sodium hydroxide with the nitric acid, what I will be getting? I will be getting the sodium nitrate and water. Next is lead nitrate. तो lead nitrate हमें मिलेगा lead से directly. Okay, just a minute. Yeah. So I'll take lead, and when I react it with the nitric acid, I will be getting what? Lead nitrate, water, and nitrogen dioxide. And the next one is aqua regia. What is aqua regia, by the way? So it is a mixture of nitric acid and hydrogen chloride, hydrochloric acid in the ratio 1:3. So how do we get it? Nitric acid, the hydrochloric acid, and we get the aqua regia, which is used to dissolve the noble metals. Okay, after that we have next question. The action of a crystalline heat on a blue crystalline solid X gives a reddish brown gas Y, which is a gas which relights a glowing splint and leaves a black residue. When gas Z, which has a rotten egg smell, is passed through X, a black precipitate is formed. So we have to find X, Y and Z. तो सबसे पहले X जो है वो एक blue crystalline solid है. Hello Shreya. So what will A be? जो X है हमारा वो हो जाएगा copper nitrate. After that, when we heat it, it will be giving a reddish brown color gas Y. तो जो हमारी brown gas है, that is what? That will be the nitrogen dioxide. Okay, and Z, it has got a rotten egg smell, and when it is passed through the copper nitrate, it will be giving a black precipitate. So rotten egg से ही पता पड़ता है that we are having what? We are having hydrogen sulfide. Next question is we have to give the chemical equation for action of heat on X. तो हमारा जो copper nitrate है,
when it is heated, we get what? Copper oxide plus nitrogen dioxide and oxygen. And the next one is write equation between solution X and gas Z. So copper nitrate और hydrogen sulfide का जब reaction होगा, what we will be getting? We will be getting the nitric acid. So that is the basic answer. Okay. And next question is answer the following with respect to brown ring test. First of all, give the equation for formation of brown ring. तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? We will be taking FeSO4 ferrous sulfate. Then we take concentrated H2SO4. Okay, and we add dilute nitric acid. Okay, when they react, what do we get? We get a compound which is responsible for brown ring. So it is Fe2SO4 all thrice plus water plus nitrous oxide. Okay. Talking about balancing. So balancing the equation is again a very important thing. Okay. Abhi this FeSO4 plus NO. It will be giving what? Okay, now over here we need this FeSO4 which is very freshly prepared. So iska basic reason kya hai? The question is also asked that why is freshly prepared ferrous sulfate solution is used. So the reason is because the ferrous sulfate, it will be oxidizing to form ferric sulfate. Okay, so that is why we need freshly prepared. So basically it oxidizes to form ferric sulfate. And next is what is composition of brown ring? तो brown ring का जो composition है वो हमारा ये रहा. Okay, it is known as nitroferrous sulfate. So the third answer will be which is FeSO4.NO. Correct? Okay. So students, Unacademy presents Emerge, which is a mock test series for all the students of grade 10 and 12. You can enroll yourself right now. The timing for the test is 5 PM afterwards on Saturday to Tuesday. Okay, so please just note it carefully on which day you are having which test. And next is there are ongoing batches which you can enroll in. Okay, for both grade 9 and 10. If you take the subscription of grade 10, you get subscription of grade 11 and 12 absolutely free. And next is Bugs Bounty. So this is an opportunity for all the learners. If you see any inappropriate content in the video, you can report it. You can claim your prize. There is a form in the description. You can use that form to report the content. I hope that you might have understood everything that we have covered today. We will be meeting in the next class, students, in which we will be covering some more important questions of other topics. And if you still haven't subscribed to this channel, kindly like, share, subscribe and join the Telegram channel to have the PDFs. Okay, thank you everyone. Take care.